Okay, I have put this on a recording, and Dr. Satya, you can. Yes, now it is Now visible. it's Sir. okay. Okay, no problem. Yes, sir. All right. So welcome, and very good afternoon to everyone for this session on digital incubator and the accelerator. The session will take approximately an hour, and then followed by 10 minutes of discussions. So basically, World Innovation Next Network (WIN) Private Limited is a company. The mission is to build digital innovation and incubation ecosystem. And so today we are the global leaders in this platform, and we have absolutely no competition whatsoever from the world. The idea of creating this company was basically to empower all the higher education institutions with the digital tools to accelerate their growth, startups, and innovations. And so basically what we are doing is we enable them to achieve scale, speed, growth. I think growth is very important. We'll tell you how you can introduce many more new programs. You are what, AICT or you are what, NAC or an independent institution, autonomous? What is the status? Dr. Alkesh, what is the status of your university? Autonomous है, AICT है क्या है? जी सर, सर थोड़ा लिंक ब्रेक हो रही है बीच में, फिर से. Is it okay? Now it's okay. Yeah. So you are what? You're AICT institution, right? क्यों खड़े हो बेटा तुम? Alkesh, what? क्या ज्वाइन किया है? तो अभी हमारा ट्यूटोरियल और लेक्चर कैसे चल रहा है? अभिषेक आप अनम्यूट कर लीजिए, अभिषेक सक्सेना. आपकी आवाज इनकी आवाज यहाँ से म्यूट ही नहीं हो रही है. हेलो अभिषेक, प्लीज अरे मृत्युंजय, वो अभिषेक को उनकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लें अपना. ठीक है, अब ठीक है. Is it okay? हेलो. हाँ. नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके. इंटरनेट इतना अनस्टेबल इंटरनेट है यार. बीच में लिंक ब्रेक हो रहा है. सॉरी सर. Abhishek ji, हम म्यूट कर. So you can see my screen, right? Yes sir. Okay, so the idea basically of forming this company is to empower institutions for digital transformation of innovation and incubation so that they can achieve scale, speed, and cost efficiency. And so we are basically the pioneers of digital incubator and the accelerator. You can access, which empowers you to access the entire innovation ecosystem, the global innovations ecosystem in a click on your smartphone for finding out new opportunities, challenges, connecting with technologies and providers, markets, investors, and industry. So that is the whole idea that we have here. And so basically, our solutions help you in converting your existing computer labs into the digital incubators and the accelerators. So all the students are empowered, for creating innovations and entrepreneurship, design thinking, design innovations in your college. The idea is not just to develop entrepreneurs,
The idea is to also reskill the students. Because today, without the innovation skills, there are no jobs. We have received some of the best awards in the industry, the most prestigious awards, the Global EdTech Award, the Thought Leadership Award, and Tata NCII DX Award that we got last year in the most innovative practice. So that has been our journey so far. And the idea of forming this company was basically to overcome the big shortage of incubators in India, the big shortage of world-class faculty, the problem of scale and speed, and industry disconnect. So there was a 90% failure rate in the startups. There is so much of joblessness. Today, the students without the innovative skills do not even get the jobs. So the idea was that how do we really empower the institutions so that with the least amount of faculty and in the most cost-effective way, they can create a huge culture, a big culture of innovation, entrepreneurship, and startup in their institution. I hope my voice is audible now. Yes, now it's clear. Okay. Now, we have been trusted by some of the best institutions in the country, which includes the ICFI Group, Birla Institute of Technology, Lovely Professional University, MIT, WPU, Terry School of Management, Greater Noida Institute, the North Cap University. I mean, you can see that we have some of the best customers who have trusted us and they have created their innovation and startup culture. Now, from the institutional point of view, we are empowering Telangana government, the Telangana Academy of Startups. We are empowering Startup Odisha. We are the knowledge partners of Ernst & Young Startup Academy. And we are empowering High Hub of Gujarat. We also have association with Global Innovation Institute of USA, who is marketing our products in the US markets. So that's about us. So what is this digital incubator actually? The incubator consists of 6 powerful tools. I win, I ideate, I start, I master, I assess, and I present. And these tools are given on your screen. The first one is called I win. I win is a World Innovation Network. It is connecting the universities and entrepreneurs and startups with industry, corporate accelerators, corporate venturing companies, technology providers to scale up their startups in a much faster way. The platform iWin enables the innovators and the entrepreneurs to scan the global innovation ecosystem to find out the needs, the challenges, and the endless opportunities so that they can create impactful startups. And all this is available on your computers and your smartphones anytime and anywhere. The WIN platform also enables the students to connect with hundreds of corporate venturing companies who basically invest in these future startups. It connects them with hundreds of corporate accelerators who partner with the universities for scaling up their innovations, co-innovation centers, and innovation markets. The whole world actually has become open now. This is the age of open innovation. Closed innovation is finished. Most of the institutions in India, they practice closed innovation in physical incubators, in a 5x5 cubicle where the left hand does not know what the right is doing. The intention was to provide the whole world as a lab, the innovation ecosystem to the students at the palm of their hand, so that they can get mentoring, prototyping support, commercialization, market access, funding, and scale up. The second tool that we provide is called 3D Idea Generator. It's an innovation Rubik's Cube for hackathons, for ideathons, based on gamification strategy, so that you can break the mental barriers and develop cognitive flexibility of the students. I will give the practical demonstration of each of these tools, but let me just tell you what exactly do we provide to you. Number 3, we provide guided mind maps. These guided mind maps help the student to transform
the revolutionary idea into a revolutionary innovation. So, sir, link is breaking. It's your voice is not audible. From my side, it shows a full internet actually. Okay. Now it's clear. Yeah, कुछ fluctuation है. Okay, sir, I think you should join with phone. By phone, there is no problem. I think there is some problem in our No, LAN connection. No, It's please. better you join through phone. No, don't join by the phone because you will not be able to see the tools. Okay, okay. Yeah, because the tools are very important. So I suggest that, be on the laptop if it is possible, Alkesh. Alkesh, can you hear now? Okay, sir. Okay. Is it okay now? Now it's clear. Clear, sir. Okay. So Yes, we sir. provide the guided mind maps. Guided mind maps help the student to transform their ideas into business models and to raise funds. So it's a step-by-step journey that you can compare it with a Google map, so you're never lost on your journey wherever you are traveling. In a very similar fashion, the student is never lost when he uses the guided mind maps. The other tool that we provide is called ISS, which enables you to assess the power of an idea and to do the idea validation. This is a very important tool which enables students to fine-tune their startups so that they can measure, analyze, improve, and evolve on their journey. The next is the masterclass lecture series. So these are the set of videos for the students to have a complete mastery on the subject of innovation and entrepreneurship. Imagine you have 2,000 to 4,000 students, and today everybody has to be trained on innovation and entrepreneurship. It is very difficult to have additional professors because they're going to cost a lot of money. So in a very cost-effective manner, the students can access this platform and understand, gain a complete mastery on the subject of innovation and entrepreneurship. I hope, Alkesh, I'm connected well now and you can see the screens. Yes, sir. Now Okay. your voice is clear, sir. Yeah. So, and the last is called I Present. This is basically the premium presentations, ready-made presentations, templates. PowerPoint templates are provided to the students so that they can create their elevator pitch, they can make their pitch decks, they can prepare excellent business plans, business models, pricing strategies, marketing strategies without the support or without having a need to create any kind of a fresh slide. So all the templates are provided for a stunning impact. This is the complete platform that we provide. When it comes to the platform of mentors, we provide the mentors and the ecosystem partners. These mentors are on your screen. So at any point of time, whenever the students are stuck up at any place, they can always consult our mentors. So they are into R&D, they are into design, they are into technologies, they are the startup experts, venture funding experts, scale-up experts, everything, right? So that's the kind of the pool of mentors which comes on this platform. There is an international network. So if your university wants to connect, or there is any student who wants to do any kind of a project in all these countries, whether it is Finland or Norway or US, anywhere, any part of the world, we are very easily able to connect. So that's the kind of network that we provide. And these are our industry customers. So we connect you with the industry customers for strategic advantages. For example, FICCI or CII or Aditya Birla Group or Tata Group, they're all connected to us. They're our customers on innovation, actually. So any student coming up with, let's say, any kind of an automotive idea, we can straight away connect with Pracheta Nagar of Tata Motors. So we are one-to-one, with all these strategic industry customers. We are recognized by Startup India, and that's a certificate of recognition that we have into an edtech industry. And that is why I think all the government institutions, they have become our customers. So whether it is Startup Odisha, we can connect your students for scale up and many other strategic advantages with Startup Odisha or T-Hub of Hyderabad, the Telangana Academy of Skill and Knowledge, your I-Hub of Gujarat or Startup Tamil Nadu. So we are completely connected with the entire ecosystem.
This was my previous presentation. So we are empowering Kumar Guru Institute also on their IEV program. So this is not for you. And okay. So the idea is that, how do we help you to develop the innovation and entrepreneurship mindsets, which is required by Atal Innovation Mission, ARIA. That is the first thing they say. And then how do we empower you with the new programs? Because ARIA says that you have to bring innovation and entrepreneurship teaching and learning programs. But unfortunately, many universities can't do that because they don't have many professors. So we provide you with all the programs, and we provide with a pool of mentors, and which enables you to really maximize your revenues and infrastructure, where you can convert your computer labs into the innovation and the startup labs, because you need to create a startup enabling infrastructure. The whole intention is to accelerate startup ecosystem. From the AICT point of view, every student has to create a project. So our tools can be used because he gets 20 credits from AICT, and it's compulsory for him to spend 20 weeks. You must be the AICT institution, right, Alkesh? No, sir, we are from UGC. So you're NAC. Okay, you're NAC accredited. NAC, yes. Okay, Yes, sir. no problem. But in any case, even for NAC, it is important for students to develop these projects. The biggest advantage of the platform is, besides improving your ecosystem, is you can create many long-term and short-term programs. In innovation and entrepreneurship, many short-term programs. You can get the student subscriptions. So you can see the kind of programs that we empower the institutions. So you can create MBA in design innovation. You can create MBA program in innovation, entrepreneurship, and venture creation. This is absolutely all the modules, all the courses, and how the students will use our tools. All the references for the 2 years MBA program is given here. Similarly, the BBA programs and the for the School of Management is all given here. How BBA students are going to attempt this, so that you can generate new revenues. A batch of 20 students gives you 1 crore and 80 lakhs of rupees. If you can start this program, the batch of just 20 students in IEV, Innovation, Entrepreneurship, and Venture, gives you 1 crore 50 lakhs. So we also want to increase your income, because we realize that many of the institutions today are struggling, and there is a pressure on the income that they have today. So we also empower you to create certificate programs, the short-term certificate program, which can be done for EDP, MDP, FDP, etc., so that you can generate more income. And you can see that the short-term programs also are bringing some good amount of money and the revenue generation for the institution. So this is basically, in a nutshell, the offerings that we provide to the students, to the institution. So I will take you to the practical tools now. I hope you can see the screen. Yes, sir. Okay. Now, these are the practical tools that we provide for the students. And as I said, that our central tool is called the guided mind maps, which takes you right from ideation to product design, to developing new technologies, smart solutions, doing a competition SWOT analysis, developing innovative business models, developing innovative marketing strategies, and raising the fund from the corporate venturing companies. So the complete journey is something that we cover for you. So if you want to see what the guided mind map looks like, it's on your screen. So here you can see that this is the template of the guided mind map. So we have adopted a design-centric approach to the MBA programs and innovation programs and startup programs. So it has got all the idea prompts over here, where the students have to only fill this up. You can see the screen? Yes, sir. Okay, now the first thing is for me to know what is the global challenge. So I can simply go and click here. And the moment I click here, it takes me to our World Innovation Network platform, where you can see the various challenges of 2023 faced by many organizations. So whether it is Dassault Systems or Bosch or Toyota or many other companies, they have given their innovation challenges on your screen.
The students have to simply go and find out as to what those challenges are. If I want to see what is the challenge of Unilever, I can straight away go in 1 second. I can see here is the challenge of Unilever on your screen. Right? So there are their latest challenges. Climate action, in regenerative nature, in waste-free world. Further, if I go, I can see the challenge that they are facing. For example, sustainable packaging in the ice cream. Now, this is what is that $1 million idea that our students are not able to find. This is the problem that our students have to solve. Not only do they have a problem, they also have a customer who is going to pay the royalty for that problem. So no more trying to create product market fit, going to struggling in the market, trying to create your business success story and all that. That becomes a very, very challenging task. And 95% people, they fail there. So in a fraction of a second, you can find out the latest challenges. And not only that, if you find out the needs, what are the needs of the companies? What are the needs of the industry? It is here on your screen. All the industry over here, for example, consumer electronics, banking industry, energy, chemical, pharma, automotive, FMCG, all their needs are here. You can simply click, go and find out what they need. So you can see there are 37, companies in the fast-moving consumer goods who have given their needs here. Nestle, Coca-Cola, Pepsi, Estee Lauder, Walmart, Kellogg's. All these companies now, they have outsourced innovation to the external players. They are collaborating with the universities and students, and they are giving them their needs to solve them. I hope you are getting my point, Alkesh, what they are doing now. So yes, you can go and straight away click over there and find out, so what is Procter and Gamble looking for? Just click to see what is their need. If I don't know the market need, how will I create an innovation? Right now, what we are doing is we are trying to create innovation and then find out the market need. That is creating 95% failures. And that is not an acceptable system. I must know that the customer has a demand for this, and then I create the innovation. So they need fabric care innovations. They need oral personal family care innovation. A simple thing like diaper, created $1 billion industry for Procter and Gamble, because somebody observed that mothers at night have a problem to change the wet cloth of the baby. So innovation is not a rocket science. Many of us believe that, oh, innovation hai to pata nahi koi technology hi hogi. Innovation is understanding the needs of the customer. But where is my customer? हम यूनिवर्सिटी में इनोवेशन करते हैं विदाउट गेटिंग कनेक्टेड विद अवर कस्टमर विच इज द इंडस्ट्री. तो हमने आपके कस्टमर के साथ में आपको पूरा कनेक्ट कर दिया. सो द स्टूडेंट्स एंड और ये बड़ी बड़ी कंपनी आजकल यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट इसलिए कर रही है क्योंकि इनके पास में इतनी बड़ी पावर नहीं है. आपके पास में जो 2000 बच्चे हैं वो इनके पास नहीं है, और इनको अपना इनोवेशन साइकिल टाइम जो है वो खत्म करना है. दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन रिसर्च. So they want passionate students. Now, oral personal family care, beauty and grooming. How many girls can come up with the ideas? Spark Beauty Ventures, home care innovation, packaging innovation. ये सारी उनकी needs हैं. और हम अपनी brainstorming से जो है अपने ideas generate करते रहते हैं कि यार ये चलेगा क्या नहीं चलेगा मार्केट. ये एक बहुत बड़ी fallacy है. और अगर मुझे और पता करना है इसमें कि ओरल पर्सनल फैमिली केयर में क्या है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो ये मुझे बताते हैं हमारी आज की डेट में इस कैटेगरी में 13 रिक्वायरमेंट्स है. तो अगर आपका कोई भी बच्चा अगर कोई भी आइडिया लेके आता है टू क्रिएट स्लीप टेक्नोलॉजीज, ना ही उसके पास इनोवेशन है, उसके पास में प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी है जो उसको रॉयल्टी देगी उसका पेटेंट का. डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज फॉर द हेल्थ केयर. मान लो मैं ये सिलेक्शन करना चाहता हूं, मैं पैशनेट हूं इसके बारे में, तो मैं अपनी नीड को डिस्कवर कर लेता हूं. ऐसे हजारों कंपनीज की नीड्स को आपके बच्चे डिस्कवर कर पाए और इमीडिएटली जाके वो अपने माइंड मैप के ऊपर में एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में
वो यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं ऑन द नीड आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये आप देखिए, ये हमने यहाँ पे जो है वी हैव पुट द नीड इन द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। और मेरे हिसाब से जस्ट लाइक अ गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, स्टार्टअप भी गीगो मशीन है। अगर हमारा ग्रेट आइडिया अंदर नहीं जाएगा तो ग्रेट इनोवेशन, ग्रेट स्टार्टअप नहीं आ सकता। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? I can simply click on this, the next button, which is here. Number one step, solve it, analytical thinking. It opens up a new mind map and it is telling the student with the help of this video what needs to be done. Analytical thinking refers to the ability to break down the problem into smaller parts, analyze, understand them, and draw proper So how do I how do I break the problem into smaller parts? Uske liye the student has to simply expand this. So what are the causes of the problem? And he simply picks up over here and writes that these are the causes of the problems. Why do you think the problem exists? स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको सिर्फ फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। Why do you think the problem is there? How many people are suffering? Who are the people who are suffering from this problem? ताकि उसे प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Many people try to jump on the solution without knowing the actual problem. So systematic survey, analysis of the problem. After analytical thinking, we go to creative thinking. लेकिन ये creativity क्या भला है? ये creativity होती क्या है? हम सब बात करते हैं creative idea लेके आओ, कहां से कोई आइडिया लेकर आएगा? आप जैसे ही इसे क्लिक करते हो तो ये आपके लिए एक नया क्रिएटिविटी का माइंड मैप खोल देता है। अल्केश, आप देख पा रहे हो ना? यस सर, यस सर, क्लियर है ना? तो अब अगर जी, मुझे जी। मालूम करना है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, द वीडियो ऑन टॉप एक्सप्लेन्स। लेकिन सबसे पहले आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है यू टू चैलेंज कॉमन बिलीफ्स। लेकिन इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इसको नोट को खोल के पढ़ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को तो एग्जाम्पल चाहिए। सो यू हैव टू चैलेंज दैट द थिंग्स मस्ट ओनली बी डन इन ए सर्टेन वे। मतलब हम 50 साल से एक चीज करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट 50 साल भी वही करेंगे। सो व्हाट आर द बिलीफ दैट वी नीड टू चैलेंज? सिमिलरली चैलेंज द assumptions। बिजनेस assumptions को हमें चैलेंज करना है। ये assumption थी कि हमें नॉनवेज के लिए जो है एनिमल काटना पड़ेगा, लेकिन आजकल तो प्लांट बेस्ड मीट ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट के माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि अगर उससे कोई भी आइडिया अगर है तो वहां पे इसको सब टॉपिक पे जाके ही कैन से सर इस कैटेगरी में मेरा ये आइडिया है कि आई वांट टू चैलेंज दिस assumption। आप समझ रहे हो ना डॉक्टर अल्केश? यस सर, यस सर। Right? So it becomes very easy. Similarly, other triggers, divergent thinking, convergent thinking, iterative thinking, what if scenario, frugal thinking। frugal thinking India frugal में master है। ये frugal क्या होता है? तो creating new applications, इसका मतलब क्या है? तो अरुण प्रभु ने अभी ऑटो रिक्शा के ऊपर घर बना दिया, जिसमें आनंद महिंद्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स उनको बताते हैं, दी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर, दी मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस। सो स्टूडेंट के पास में एक आइडिया आएगा कि हम एक नया आइडिया यहां से निकाल के आते। तो वो सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं कर रहा है पढ़ाई का। टिपिकल प्रोग्राम्स में, हमारे रोड सिस्टम में वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन करता है, लेकिन यहां पे उसे वो स्कोप नहीं है। यहां पे ही हैज टू अप्लाई दैट। सो दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग। इस तरीके से वो सारे के सारे ट्रिगर्स को क्लिक करता है। उसके बाद में जो है ही कम्स ऑन द आउटपुट ऑफ दिस माइंड मैप इज इनोवेशन। बट इनोवेशन क्या है? उसका सोल्यूशन, कैन इट मेक थिंग्स फास्टर? फास्टर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस द प्रोसेस टाइम, रिड्यूस द साइकिल टाइम, रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, द ट्रांसपोर्टेशन टाइम।
तो ये सारी की सारी चीजें उसे एक क्लिक में बताती है कि अच्छा फास्टर उसने कर दिया, तो कैन आई ऐड ए न्यू फीचर, कैन आई मेक इट मोर एफिशिएंट, कैन आई ऐड मोर कैपेसिटी। तो जब वो इन ट्रिगर्स को जब वो देखता है तो उसकी इनोवेशन जो है वो बहुत पावरफुल बन जाती है। आजकल क्या है कि एक आइडिया आ गया और वही मेरा इनोवेशन है। इनोवेशन इज एन इवोल्यूशनरी जर्नी। सो द प्लेटफॉर्म enables द स्टूडेंट्स टू रियली अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और उसके बाद जब उनके आइडियाज वो अगर इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बेसिस पे लेके आते हैं, कभी कभी हो सकता है कि वो अपने ही आइडिया को सॉल्व कर रहे हो, वो इंडस्ट्री की नीड पे नहीं वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे तो चलिए हमने कस्टमर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इन सम केसेस वो अपने ही आइडिया पे काम करते हैं। तो अपने आइडिया पे काम करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले उन्हें देखना पड़ता है कि आइडिया वैलिडेशन क्या है। तो क्या मेरा आइडिया डिजायरेबल है? इज इट फीजिबल इन द मार्केट? कैन माई आइडिया ब्रिंग मनी फॉर मी? तो ये मोटा मोटी आई मीन इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, इसके प्रॉफिट कैसे होंगे, क्या ये आइडिया आगे चल के स्केल अप हो सकता है? वो ये सब नहीं करते हैं बोल के 95% टाइम वो फेल कर जाते हैं। इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है भाई, 50 करोड़ है कि 2000 करोड़ है? इसका CAGR किस रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं स्टूडेंट्स को समझने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को समझने के लिए। और एक ही बार में जाके वो इस पे क्लिक करके अपने आइडिया का असेसमेंट कर सकता है कि मेरे आइडिया की पावर क्या है, ये मार्केट में कल को सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। जब वो इन पैरामीटर्स में अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है तो उसे यहाँ पे एंड में स्कोर मिलता है। अब जैसे यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्कोर है 54, मतलब माई आइडिया इज एट ए हाई रिस्क। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है कि मैं 54 में क्यों हूं, क्योंकि रीजन ये है कि जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसमें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो जैसे ही मैं इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली करता हूं तो 3 से मेरे मार्क्स 10 हो जाते हैं। और जो मेरी जो मेरा जो कंपटीशन है वो अगर अगर इंटेंस है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर कोई भी कंपटीशन नहीं है तो उसे 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ग्राफ उसका चेंज होते रहता है। आज आपके पास में 10 आइडियाज आएंगे इवैल्यूएशन के लिए, आप कैसे बोलोगे कि ये सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा? हमारे पास इंट्यूटिव पावर छोड़ के और कुछ भी नहीं है, और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मेरा जो इनोवेशन की जो मैंने इनोवेशन की अगर वो लोकल इनोवेशन है तो मुझे सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। वो आपके यूपी की ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसलिए आपका स्कोर कम हो जाएगा। अगर आप इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाता है, और अगर आप वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपका स्कोर 10 हो जाता है। तो ये आपको एक पैरामीटर देता है। देखिए मेरा रेड जोन से मैं ग्रीन जोन में निकल कर आ गया। अल्केश जी, आपको आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes, sir, yes, sir. Yeah. Right. So this is a software and a tool which enables you to really find out the assessment of the entire platform. और उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे, अब आपके पास में आइडिया, आपको डिजाइन बनाना है, तो आप डिजाइन कैसे बनाएंगे? तो डिजाइन इनोवेशंस के लिए इट इज अ डिफरेंट माइंड मैप। तो जैसे ही आप इसे डिजाइन इनोवेशन पे जाते हैं तो आपके लिए एक डिफरेंट माइंड मैप खुल जाता है। मुझे अगर आज कुछ भी अगर एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट प्रिंसिपल को यूज करना है या कंबाइन प्रिंसिपल को यूज करना है, द वीडियो गाइड्स यू व्हाट टू डू। लेकिन कंबाइन का मतलब क्या है? कंबाइन का मतलब है कंबाइन टू प्रोडक्ट्स। हाउ? द एग्जांपल्स। कंबाइन टू प्रोसेसेस। हाउ? So the students will just, and they might say, I have an idea to combine these two products together. Combine two different technologies. और यहाँ पे जो है उन्हें आइडिया जनरेटर प्रोवाइड करते हैं, which enables them to basically create many more ideas. So this is basically a innovation Rubik's that I told you. So if I want to create something new today,
and I want to create, ideas, or there's a hackathon that is going on, I can shuffle the cube. The moment I shuffle the cube, there are new words and combinations, different and combined style and solutions. I can go horizontal, I can go vertical, I can go any ways. So this is the power of the entire package, that we are providing. Suddenly I see efficient and digital. So I can pick up my ideas from here. And the best thing is that it is programmed for a 20 times of random shuffling. So I can shuffle the cube 20 times for creating many more new permutations and combinations. और आप जो है अपने इनोवेशन टीम को 6 कलर्स में डिवाइड कर सकते हो. व्हाइट कलर टीम व्हाइट वर्ड्स को कंबाइन करेगी, ब्लू कलर टीम ब्लू वर्ड्स को करेगी, रेड कलर टीम रेड वर्ड्स को कंबाइन करके इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगी. So this is a platform. So how do I make something, user centered with navigation? ऊपर के जो लाल जो 2 words है. How can I create taste for every culture in India? जो blue words है. Hybrid and materials. हम materials में क्या hybrid लेके आ सकते हैं? Right? Solar and futuristic. तो futuristic solar green. I'm talking about these 2 green. वो क्या हो सकता है? तो आपके brainstorming के लिए. Right? मैकेनिकल और नेविगेशन. क्या कोई भी चीज अपने आप नेविगेट कर सकती है? आप सोचिए आपके इनोवेशन सेंटर में कितने सारे आइडियाज आएंगे. ये तो एक साइड है. मैं दूसरे साइड में जाता हूं. एनर्जी एफिशिएंसी विद इमेजिनियरिंग, द फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी और ये तो सिर्फ एक ही क्यूब है. इस तरीके के 12 क्यूब्स हैं. ये डिजाइन थिंकिंग पे है, मटेरियल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजीज के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर में, जो कि आपकी हर नीड के लिए जो एक ब्रेक थ्रू आइडिया लेकर आए. सो दिस इज द, और स्टूडेंट्स इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो खेल रहे होते हैं. दे आर प्लेइंग ऑन ए क्यूब एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू. नीचे का सबसे बॉटम वर्ड जो है सेंसर. अब सेंसर के साथ में हम इमोशन कैसे ऐड करें? क्या सेंसर मेरे इमोशन को रीड करके कुछ बतला सकता है? तो आई कैन पिक अप the marker tool over here. I can pick up this red color and I can pick up this eclipse and say that, how can I have a fusion of the sensor and emotion? टाटा मोटर्स को जब हमने ये बताया था तो उन लोगों ने ट्रक के अंदर में ड्राइवर की नींद को सेंस करने के लिए जो है टूल लगा दिया, जिसको बोलते हैं ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम्स. आज अगर, क्योंकि मैंने उनसे बताया था कि ड्राइवर के सोने के कारण से 30 आदमी यमुना एक्सप्रेसवे पे मर गए थे, अगर आपको याद हो, 4-5 साल पहले की बात है. तो मैंने उन्हें बताया कि इसे आप प्रिवेंट कैसे करेंगे. तो ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम्स वो लेकर आए. तो ए वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी एंड टूल ये है आपका दिमाग, क्योंकि आपका ह्यूमन दिमाग इसे सोच नहीं सकता है. अगर मुझे और इसमें अगर कुछ अगर ऐड करना है तो सेंसर, इमोशन एंड लैंग्वेज को मैं कैसे कर सकता हूं. सेंसर, इमोशन को आप टेक्नोलॉजी, और क्या टेक्नोलॉजी सेंसर और इमोशन में आप ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपने आइडियाज को एक्सपैंड कर सकता हूं. तो ये जो ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है, ये जो आपके गाइडेड माइंड मैप्स एंड ऑल दिस टूल्स का जो हम कंबाइन पे थे, तो अभी आपके लिए इनोवेशंस ब्रेक थ्रू हो जाती है. अगर मुझे कुछ एलिमिनेट करना है, आप सोचिए कि आपको एक स्टूडेंट को आप कोई प्रोजेक्ट दीजिए कि एलिमिनेट पे मुझे एक प्रोजेक्ट, एक इनोवेशन करके दिखाओ इस प्रिंसिपल के ऊपर. उसे तो पता ही नहीं है कुछ भी. वो जैसे ही क्लिक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मुझे एलिमिनेट क्या करना है. मुझे एलिमिनेट करने हैं हार्मफुल इफेक्ट्स. तो मैं हार्मफुल इफेक्ट्स को एलिमिनेट क्या कैसे करूंगा?
noise free, gluten free, chemical free, pesticide free, oil free, maintenance free, hazard free. Suddenly आपके दिमाग में ideas आते हैं, and you think that I can actually create a innovation based on this kind of a topic. तो आइडिया ये है कि हम हर एक चीज को देख सकते हैं यहाँ पे। अगर कंपोनेंट्स को रिमूव करना है, अगर स्केर्स मटेरियल्स को रिमूव करना है, अब आप सोचिए कि अगर स्टूडेंट को अगर हम एक ब्लैंक माइंड मैप देते हैं, हम उसको ये देते हैं कि आप इनोवेशन करके दिखाओ, आप इसको कंपेयर करो और आप इस वाले माइंड मैप को कंपेयर करो, उसके पास सारी की सारी चीजें एक क्लिक में अवेलेबल हैं। आपने फर्क देखा है कितना है? अगर हम उसे ये वाली टेम्पलेट देते हैं और बोलते हैं इनोवेशन करने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सारे टूल्स, अगर आपने कोई स्मार्ट प्रोडक्ट बनाना है, आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो वहां पे होंगे ना? Yes, we have Institute of Technology. ओके, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज So पूरी we have student. आज पूरी दुनिया का फोकस स्मार्ट थिंकिंग पे है, Yeah. राइट? तो स्मार्ट में क्या क्या आता है? ऑटोमोबाइल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज कमिंग ओवर देयर। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि स्मार्ट ऑटोमोबाइल क्या होता है। हाउ विल आई क्रिएट एन आइडिया ओवर देयर? आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, आपके पास में 30 सब ब्रांचेस खुल जाती है। और हाउ विल आई रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ईवी किलोमीटर एंजाइटी? एक क्लिक में आपको मालूम पड़ जाता है कि these are the areas to be looked into for improving the EV kilometer range. Similarly, if you want to create an app, what kind of an app will you create in the smart automobiles today? Can you create an app which can do a vehicle diagnostics? Can you create an app which can warn the people to avoid the accidents? The apps for the parking and charging stations. So all this, the gesture controls, which your students can create. But what kind of gestures are needed? मतलब आप प्रोडक्ट की बैंडविड्थ को देखिए, एक ही क्लिक के अंदर उसको जो है all the ideas is something that he gets. So this is basically the power of the whole package. And all the technologies, anything that you want to know today, if you want to do something on agriculture, अगर हमें एग्रीकल्चर पे कुछ करना है, तो there are so many ideas the student gets for the agricultural technologies, for innovations in the field of agriculture. You can go here, automated systems or increasing the shelf life of the product. Now, इतने सारा वेस्टेज हमारे इंडिया में है. Can they create a better packaging solutions? Can they create a proper storage solutions for that? And if they can, they have to simply pick up and write their ideas. This is my next idea. Can they create, use of natural preservatives? So, I mean, at every stage, you will find that it opens up the array, it amplifies the human mind. For creating many more new innovations. And this every mind map is connected with the World Innovation Network. So if I want to see what is happening in the case of agricultural innovations, it is all available, on my screen. So I can see the videos to see how the technologies are working. So all the agricultural technologies and the way they work, they are on the screen of a student on a smartphone, and it makes it very, very easy. Then you go to business modeling. You can create a business model. How to create a business model? How to create, I mean, this is the operating model, for example.
हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, रेवेन्यू मॉडल कैसे क्रिएट करोगे, आपके रेवेन्यूज कैसे आएंगे. सो एवरीथिंग बेसिकली अवेलेबल टू यू इन द क्लिक ऑफ ए बटन. और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी अगर है, मैं प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारे लोग फेल कर जाते हैं. तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग कैंपेन किस तरीके से बनेगा, ब्रांड की पोजिशनिंग कैसे होगी, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे होगा. सो एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इज गिवन ओवर हियर इन ए क्लिक, and of course with the video. And here what you see, then if I've created a startup, how do I raise my money? So I can go here, connect with the venture capital companies and talk to them for funding us. ये सारी दुनिया के साथ में हमने आपके हर सेक्टर में हर स्टार्टअप को कनेक्ट कर दिया. आज अगर मेरे पास में ऑटोमोटिव का स्टार्टअप है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो स्केल अप कैसे होगा, हम किसे दिखाएं उसे. आप अगर किसी बच्चे ने स्मार्ट ऑटोमोबाइल के जरिए अगर कोई इनोवेशन बना ली तो उसको कहाँ लेके जाएगा वो. जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे 30 कंपनीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं नेक्स्ट आइडिया के लिए. दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर कि हमें कहीं से बाहर से एक नया आइडिया मिल जाए. वो फंडिंग के लिए बैठे हैं. आप इमेजिन के लिए आपका जो कन्वेंशनल वेंचर कैपिटलिस्ट है वो तो पैसा ही नहीं देता है, बट दीज पीपल दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी. और ये जो है आप एक ही सेकंड में इनके पास क्लिक करके आप अपना पिच डेक इनको जो है सबमिट कर सकते हैं. तो ये आपका पिच डेक यहाँ पे सबमिट हो जाता है. मतलब आपसे वो कुछ सवाल पूछते हैं और ये आपकी पिचिंग में आपको बेसिकली हेल्प करता है. तो इतना बड़ा जो हमने सिस्टम बना दिया आपका, ये आपके स्क्रीन के ऊपर में है. 5,600 linkages to the open innovation ecosystem. So we are connecting you with technologies, with resources, with the technology solution providers, everything that you want in the innovation ecosystem. And, challenges, every section connected with our mind map, corporate venturing companies, corporate accelerators. अगर एक्सेलरेटर के पास जाना है तो आप सीधा कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर के पास जाइए. अगर आपके पास इनोवेशन है, मेरी बच्चे ने कोई अगर इनोवेशन की है स्टूडेंट ने, तो मैं उसे कहाँ लेके जाऊं. मान लीजिए उसने ऑटोमोटिव में कुछ किया है, तो 45 एक्सेलरेटर्स हैं यहाँ पे, और आप इन एक्सेलरेटर्स को देखिए ये आपको क्या क्या दे रहे हैं. दे आर गिविंग यू एवरीथिंग. दिस इज कॉल्ड ओपन बॉश, पार्टनरशिप बिटवीन बॉश एंड द स्टार्टअप्स. ये आपकी मार्केट है. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी विल परचेज द आइडिया एट ए पीओसी स्टेज. उसे इनोवेशन तक करने की जरूरत नहीं है पूरी. आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है ये. लेकिन यू कैन टेस्ट, लर्न, यू कैन स्पीड अप नेटवर्क एंड स्केल. तो सारी की सारी आपको जो है जितनी भी सपोर्ट आज की डेट में आपको चाहिए, वो सारी आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अवेलेबल है. हजारों एक्सेलरेटर्स हर एक सेक्टर में जो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं. सिर्फ बाहर के ही नहीं, आई मीन आपके यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अगर आइडिया बनाया आपका, लेट अस से इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, तो वो कौन सी कंपनी के साथ कनेक्ट करेगा. Lafarge, one of the biggest multinationals, they're supporting the external innovators. So इसके बगैर हमारी इनोवेशन अधूरी है. हर एक जगह में हमने उन्हें कनेक्ट किया. इंडियन कंपनीज के साथ में जो एक्सेलरेटर्स हैं, टाटा, ये आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा मोटर्स, इनोवर्स, मेल, मारुति, वेदांता, GeoNext, everyone is basically providing the students the support to support their innovations connected with them. और हर एक आदमी उनको इकोसिस्टम, पार्टनरिंग, मेंटोरिंग, फंडिंग सपोर्ट दे रहा है. अब अगर आपके पास में कोई एयरपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपके स्टूडेंट को पता है कि मुझे जाना कहाँ है. This is basically the entire ecosystem that we provide, and we have got ready-made templates. जैसे मैंने बताया था आपको, जो ready PowerPoint templates which are there for the students for various informations that they have to give.
let us say they want to create a value proposition statement. ये टेम्पलेट को वो यूज करके जो है अपने इम्पैक्टफुल पिच डेक्स को बना सकते हैं. और दिस इज द पावर ऑफ द पैकेज. अपनी पिच डेक बनानी है तो पिच डेक के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, एलिवेटर पिच कैसे बनती है, अपने आप को वो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, उनका मार्केट साइज क्या है, उनके माइलस्टोन्स क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, एवरीथिंग. कस्टमर की चैलेंज को वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या चैलेंज को वो सॉल्व कर रहे हैं. तो उन्हें इससे समझ में आ जाता है कि उनकी जो फंडिंग है वो कैसे होगी और इन्वेस्टर को किस तरीके से जो है अट्रैक्ट करना है. तो ये हमारी जो है, ये हमारा टोटल जो है वो आपको ऑफरिंग्स हैं. और जहां तक हमारे इम्पैक्ट का सवाल है, आई थिंक द इम्पैक्ट of the journey that we have created. Just give me 1 minute. Let me find out that file. तो ये हमारी जो जर्नी है, हमने बाकी जब इंस्टीट्यूशंस में जो ये डिजिटल इंक्यूबेटर लगाया है उसका रिएक्शंस वो आपके सामने है. राइट. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इकफाई, एसजीटी यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, ACIC, CBIT डिजिटल सेंटर्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेज यूनिवर्सिटी, ये सारे हमारे टूल्स हैं जो उनके कंप्यूटर लैब्स पे लगे हुए हैं. आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So all these universities and their professors are using it to great extent, great parts. Atharva Innovation Lab, MIT WPU, Kirloskers, Harper School of Business, SCMS. So this is basically the journey. Excellent feedbacks. ये हमारे ये हमारे जो है डिलाइटेड कस्टमर्स, उनके फीडबैक्स. एक्सप्लोर अनइमेजिन्ड अपॉर्चुनिटीज, एक्सीलेंट फीडबैक फ्रॉम फैकल्टी. 5,000 बच्चों में उन्होंने कल्चर डेवलप किया विद इन नो टाइम विदाउट एनी एडिशनल फैकल्टी. MIT WPU. क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कस्टमर डिलाइट है. So this is what is my presentation to you and your team. So my time is over. मैंने 1 घंटे से कम ही वक्त लिया होगा शायद, और आपको हमने सारा का सारा बतला दिया है. Yes, sir. Yes, sir. It's very interesting presentation, Praveen sir. Thank you. बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी देखने सुनने को मिली प्रेजेंटेशन से. सब न्यू आप देखिए ना लोगों का ये जो फीडबैक है, द एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट. ये हमारे कस्टमर्स हैं. मैं Yes, अपने मुंह से कुछ भी बोलूं वो सही नहीं लगता, लेकिन जब लोग बोलते हैं और जब लोग दूसरे को रिकमेंड करते हैं, जब आप इसे लोगे तो आप 10 आदमी को और बताओगे. क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट कंपनी नहीं है. वी वांट टू क्रिएट ए बिग सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट. yes, sir. लाइवलीहुड पे, जॉब्स के ऊपर में. हमारे स्टूडेंट्स का कॉम्पेंसेशन पैकेज 2 से 3 गुना बढ़ गया जब इंस्टीट्यूट्स ने, जब कंपनी ने देखा कि स्टूडेंट्स के पास में ये वाली इस तरीके की पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. जी सर. अभी तो मैंने आपको इंडस्ट्री के, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, वो उनको जॉब्स चाहिए. अगर कोई MBA आपके कॉलेज में एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, अगर वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो आप सोचिए जब वो इन टूल्स पे काम करेगा तो उसकी क्या स्किलिंग होगी, उसका क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा. और सबसे बड़ी बात, हमने इंडस्ट्री के माइंड मैप दे दिए. अगर कोई आदमी ITC ज्वाइन करना चाहता है, कोई आदमी अगर आज की डेट में यूनिलीवर को ज्वाइन करना चाहता है, कोई आदमी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन करना चाहता है, तो ये माइंड मैप देखिए ये इंडस्ट्री का. अगर आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाए तो कम से कम इंट्राप्रेन्योर तो बनी जाओ. वहां जाके उनको बोलो कि सर आप कन्वीनियंस फूड में ये ऐड कर सकते हैं.
सर आप यहाँ पे जो है वेलनेस में ये वाले प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट लाइन में ये प्रोडक्ट आ सकता है। तो आप सोचिए 34 इंडस्ट्री सेक्टर की इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ हमने कवर कर दी। ये बच्चे कल को वहां पे जाके ज्वाइन करेंगे। हर एक आदमी आपके इंस्टीट्यूट से कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि हर एक इंसान तो एमबीए है और इतनी सरप्लस मार्केट है कि किसी के पास काम ही नहीं है। और कंपनी जो है जब तक आपके पास कोई डिफरेंशिएटर ना हो वो आपको काम देगी नहीं। मेरा एक सवाल है, आप कैसे उनकी एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करेंगे? और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में, चैट जीपीटी के आने के बाद में और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक जॉब्स का नुकसान होगा। लेकिन चैट जीपीटी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। वो किसी कंपनी को ये नहीं बता सकती कि आप ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में ये वाला मेंस ग्रूमिंग लाइन में ये प्रोडक्ट लेकर आइए, या वो ये नहीं बोल सकती कि आने वाले टाइम में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आप होम केयर में जो है आप जैस्मीन को यूज करके ये बनाइए। अल्केश जी आप देख रहे हैं ना, पावर देख रहे हैं आप? यस सर। तो मेरा जो 99% स्टूडेंट है जो कल को काम में जाने वाला है, जब मान लीजिए आपके कैंपस में आपने यूनिलीवर को बुला लिया और आपका बच्चा जो है उनको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वो तो बोलेगा अपना पे चेक बता दे भाई कितने पैसे लेगा। क्योंकि उसके पास खुद भी आज वो कंपनी भी तो ग्रो करना चाह रही है ना। तो ऐसा हमने हर सेक्टर के लिए किया, हर एक इंडस्ट्री सेक्टर। अगर कल को वो अल्ट्राटेक सीमेंट में ज्वाइन करना चाहता है या लफार्ज में ज्वाइन करना चाहता है, तो लफार्ज के लिए वो क्या आइडिया लेकर आया है? दिस इज द पावर ऑफ द पैकेज। हर एक क्लिक में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल your 3D printed houses, how is it that they are going to create some more solutions for the industry? The sustainable construction में, your innovative packaging में, your innovations which can be done in the prefabricated solution. चाइना में कंपनी अब्रॉड वो 10 दिन के अंदर में जो है वो 50 स्टोरी बिल्डिंग बना लेती है। हाउ कैन दे कोलैबोरेट, हैव अ स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन विद देम? ये है फ्यूचर स्टूडेंट का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नहीं कर सकता। ना ही वो एक सेकंड में जो है आपको ये बतला सकता है कि आपको पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में इन लोगों के साथ में स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस करनी है। अपने आइडियाज को आप यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा दो। आज अगर आपके पास में किसी के पास कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आइडिया है तो ही नोज वेयर टू गो, एंड नॉट ओनली दैट, ही नोज कि प्रॉब्लम में कहां से फाइंड आउट करूं, इनकी नीड्स, इनके रिक्वायरमेंट्स। दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वी प्रोवाइड। तो इंडस्ट्री को भी कवर कर लिया, जो कि इंस्टीट्यूट्स नहीं कवर कर पाते इनोवेशन के लिए। आप अपनी इंडस्ट्री कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। ये ओवरऑल पैकेज। डॉक्टर सत्या इज स्टिल देयर या सत्या जी नहीं है अभी? डॉक्टर सत्या, कनेक्टेड कनेक्टेड तो है सर। अच्छा डॉक्टर सत्या, कैन यू हियर? एनीवे, तो ये है ओवरऑल हमारा ऑफरिंग। आपका कोई अगर सवाल हो तो मैं आई कैन आंसर यू। नहीं सर, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस प्रेजेंटेशन, एंड काफी नई नई चीजें पता चली प्रेजेंटेशन से। हाँ, कि किस तरह से अब हम आपको हम डिजिटल कैसे कैसे प्रोवाइड करें ये टूल्स, जिससे कि आप लोग के आपके पूरा की पूरी यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को ये एम्पावर हो। और हम बिल्कुल सर। डेमोक्रेटाइजेशन में बिलीव करते हैं। सारे के सारे बच्चे, सारे कंप्यूटर लैब, सारे इनोवेशन लैब, जितने सेंटर्स, सारे के सारे की एम्पावरमेंट हो जाएगी। और जहां तक हमारा जो प्राइसिंग जो मॉडल है, जी सर। सब्सक्रिप्शन मॉडल, जी सर। एक सेकेंड, वो है कि इट्स ए ऑल टूल्स
फैकल्टी ट्रेनिंग, स्टूडेंट ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट, लाइसेंस फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज, मतलब हम आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम्स के कोर्स मटेरियल्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जिससे कि आप बीबीए एमबीए प्रोग्राम्स आगे चल के इंट्रोड्यूस कर सकें, और उसमें कौन कौन से हमारे पैकेजेस यूज होंगे, राइट, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो। मतलब अपना रेवेन्यू लाइसेंस के साथ में टोटल पैकेज जो है वो आपको 5 लाख कॉस्ट करता है। It's a lifetime membership. इट्स ए लाइफ टाइम मेंबरशिप। तो आपके पास अगर 4,000 बच्चे हैं मान लीजिए, तो आप हर बच्चे से अगर 1,000 रुपये पर ईयर लेते हैं टू प्रोवाइड दिस टूल्स, आप उनसे हर साल ले सकते हैं। तो 40 लाख ऑफ रुपीज आप उनसे लेके आप उनकी सीडिंग में, प्रोटोटाइपिंग में, पेटेंट फाइलिंग में, आप उनके एग्जीबिशंस में आप लगा सकते हैं, प्लस आपके एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका बिजनेस मॉडल हुआ, प्लस आपका जो है रेवेन्यू मैक्सिमाइज, जो बीबीए एमबीए और शॉर्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम से आप ऐड कर सकते हो, राइट। उसमें हम 0% रॉयल्टी लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि हम एक पैसे की भी रॉयल्टी आपके किसी भी इनोवेशन में, इक्विटी में या आपकी अर्निंग में नहीं लेते। कैसा लगा आपको प्लेटफॉर्म? नहीं है तो सर बहुत अच्छा। बाकी सर जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मिली, मैं वीसी सर से एक बार डिस्कस करूंगा सर। तो आप उसके बोलते हैं बाद तो मैं आपको, और प्राइस में हम लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं। सर। सेम प्राइसिंग हमारी हर जगह में चार्ज होती है। ये हमारा ACIC CBIT का परचेज ऑर्डर है 24 तारीख का। 5,90,000 इज समथिंग दैट वी चार्ज फ्रॉम एवरी इंस्टीट्यूशन। ओके तो वी आर वेरी फेयर, वी आर वेरी ओपन, वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं कि आपके पास 4,000 बच्चे हैं तो हम आपसे जो है 10 लाख चार्ज कर लें। इनके पास तो मेरे ख्याल में सिर्फ 1,000 बच्चे ही थे। ओके तो हम ज्यादा उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आइडिया ये है कि हम आपके जर्नी पे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको जो है इसका प्रपोजल बना के आपकी ईमेल पे दे देता हूँ। हाँ सर बिल्कुल दे दिए। बाकी फिर मैं आगे वीसी सर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, और अगर आपको लगता है इसमें और एक पॉसिबिलिटी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इतना फुल यूनिवर्सिटी एक्सेस नहीं चाहिए और आपको सिर्फ एक छोटा पैकेज भी चाहिए, यू जी नो, सर। जिसमें आपका बजट में भी हो जाए, तो एक हमारे पास में 250 यूजर्स के लिए पैकेज है विच कम्स फॉर 2,50,000। ओके सर। तो इसमें जो है आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का एक्सेस नहीं मिलेगा, इसमें आपको 250 यूजर का मिलेगा एट वन टाइम। ओके ठीक है, तो इसमें आपको जो है अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो आप ये वाला पैकेज ले सकते हैं। बाद में आपको पूरी यूनिवर्सिटी के लिए लेना है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट देके। ओके। तो मैं काम करूंगा, मैं आपको ये दोनों ही ऑप्शन जो है प्रपोजल में दे दूंगा। हाँ बिल्कुल सर, आप दे दीजिए। और मेरे ख्याल में पहला वाला ऑप्शन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं। जी सर। तो प्रपोजल जो है मैं आपकी ईमेल पे आपको डाल दूंगा। आप वीसी सर से भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। बट बिल्कुल सर। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट एसोसिएशन विद योर इंस्टीट्यूशन। हाँ जैसे सेम हमने है सर। जैसे हमने पूरे हिंदुस्तान में जो है एक रिवोल्यूशन लेकर आए हैं, आपके लखनऊ में भी एक रिवोल्यूशन होनी चाहिए आपके जरिए। नहीं और आप बिल्कुल इसको सर। और आप इसको लीड कीजिए मेरे तरफ से, अल्केश जी। जी सर आप बिल्कुल। हमारे डिजिटल इंक्यूबेटर के लखनऊ में चैंपियन बन जाइए आप। जी सर। आपको ट्रेन हम करेंगे। जी। ठीक है, आप सोच सकते हैं आपका प्रोफेशनल करियर भी कहाँ जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरी अभी दूसरी जूम है टी हब ओके सर। में, तो आई हैव टू हैव ए हार्ड स्टॉप ओवर हेयर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक सत्य जी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन वंडरफुल मीटिंग ऑल ऑफ यू। और आप इसको करवाइए फटाफट ताकि हम आपके साथ में कोलैबोरेट करें। बिल्कुल सर। कम से कम अपने तरफ से तो पुश मारिए, क्योंकि आपको मेरे ख्याल में डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा। नहीं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल वीसी सर से बात करूंगा। और बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थैंक यू प्रवीण सर वेरी मच फॉर योर थैंक यू। गिविंग और टाइम एंड कभी कभी लखनऊ अगर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा जरूर मैं आके। और वीसी सर को मेरा रिगार्ड दीजिएगा। लुक फॉरवर्ड एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर। थैंक यू। थैंक यू।
तो 5,000 की मूवी बनेगी तो अगर महिला को नहीं बात है क्योंकि आई नो इनके पास इतना पैसा नहीं है, एक कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। हम्म, हम्म, नहीं नहीं बजट के बारे में इससे बात नहीं। नहीं मैं कस्टमर को सेंस कर लेता हूँ ना, कौन 5 देगा कौन 2.5 देगा, वो तो आपको सेंस करना पड़ेगा। मार्केट में देखा नहीं आपकी जहाँ आपका पुतला बड़ा हुआ गाड़ी का दाम डबल। महिला का मैंने ऑप्शन मैंने जो सुबह आया था उसको नहीं दिखाया था। लेकिन मैं कहना इसको दिखा देता हूँ ताकि हाँ मेरे ये ऑप्शन भी है, अभी तो मुर्गा यही तक था, एक छोटा साइज यहाँ से भी आ जाएगा। तो मेरा 3 हफ्ते साथ में भी 3:30 बजे 4 बजे जो है 4 बजे फिर एक प्रकाश के बिना पूछे बिना
लखनऊ का तो स्टैंडर्ड बहुत ही खराब है। मुझे तो मतलब ये इससे क्या बोले उसको, सुपरसोनिक प्लेन का मतलब।